and my video? Yes. Ma'am, Please yes, start. yes, she is visible to us. And people are just joining in within 2 minutes, so you can start. Okay. All right. So before that, I have a question. How many of you want to improve your communication skill? Tell Yes. me. I think it's an ever improvement. Everyone wants to improve their communication skills, and even I would like to improve my communication skills, because somewhere we feel that we are not able to say things what we want to say, and things get goofed up then. I'll say mostly it happens. Yes. In majority And- of cases, we want to convey something, people understand something else. Yes or no? And more than understanding, actually what happens is we become aggressive, and like, if we can say things in a polite way, like one of my friends have learned, like, you can call someone something worse also, but your communication should be right. If your communication is right, then you can say whatever you want to, within limits. And I think it's very important for us to communicate properly to people and be polite enough to communicate, instead of just accusing someone. If you accuse someone, then people can get offended and things can become worse. Yes, very true. Very true. And I will say only one thing. Communication is something, as we have taken birth, we are communicating. Whether through our crying, whether through our laughing, whether through our actions, whatever you say. Okay. And it's a fundamental parts of our life. And we must have command over our communication, because if we must have command on this, then things will become easy to all of us. Otherwise, things are literally tough, because nowadays, there was a time, there were less facilities, less money, scarcity of many things, but relationships were staying. There were great relationships 20 years back, 30 years back, 40, 50 years back, 100 years back. Yes or no? How many do agree with this? If yes, please raise your hands. Yes, Yes. ma'am. We had great and amazing equations, because somewhere we knew how to share and care, and there was always a feeling of community over there, which is not present today, unfortunately. Yes, but nowadays it lacks. Why does it lacks? Because we have become very competitive, and we all want to compete with each other. From childhood somewhere, we are not trained for communication from childhood. Because if a single child is in family, then whatever he does, family allows, okay, it's let it do. All right. Now come to the point. Go ahead. We will cover up many things. Okay. My dear friends, I'm Jyoti Singh. I welcome you all in this Communication Mastery webinar. And this webinar is something, this is going to change your life, and it is going to give you a very different, I'll say, mindset regarding communication. My question to all of you: how many of you want to communicate powerfully? If yes, type in the chat box yes. And how many of you want to speak in English fluently? Here, I know in India also the answer is for everybody yes. How many of you want to become a world-class communicator? If you want to become a world-class person, my dear friend, then definitely you all have to become a world-class communicator. At the same time, how many of you want to become a world-class public speaker? The answer is, let me read the chat. For everything, I have got the yes. Yes? Yes. How many of you all want any 1 or 2 or 3 point, or all 4? If yes, type in the chat box 4. If you want any 2. Yeah? Are you okay? Anything? My voice is audible. Everything is all right? Yeah. I think it's might be the internet connection. Yes, internet. All right. So please happened with me once. But that's okay, ma'am. Okay, all right. So I'll say just mute everybody. Only one person who is the other host, they can keep themselves if there is something to, the voice is not lagging or anything like that. Otherwise, in between it will little disturb. Okay, at the end I will take your questions, not to worry. So just I can see most of you want in all those, some people wants in 4 aspects, some people wants in 3 aspects. Okay.
And this is something, my dear friends, it's so much important. Now, if you talk about me, how I have learned training, I have learned from more than 50 trainers, worldly and spiritually, okay, from both the category and from India and abroad, all the trainers. Why am I here? With your permission, I'd like to share with you. I'm postgraduate in literature from BH University. Professionally, I'm a thought leader. I work as a life coach, business coach, and as a high ticket closer. I deal with mindset expertise. I'm consultant, top class content creator, NLP expert, and pure spiritual seeker. I teach people how can you get succeed, how can you get everything into your life by spiritual laws. The purpose of my life is to use 100% of my potential and teaching others to use 100% of their potential. This is the mission and vision of my life. My dear friends, I have just spent my journey as an educationist 10 to 12 years, 3 to 5 years as a business coach. And now, the thing is that what is it that made you join this live training today? What are you wanting to change into your life? Because I will say, first of all, you have to know what do you want, because until you don't know where to go, you cannot reach to the destination. So ask yourself, what do you want to change into your life? Type in the chat box. What are you wanting to level up into your life? And where do you want to level up yourself? And what potential do you know that you are not tapping into? Means you have some potential, but you are not tapping into, you are not utilizing this. So how can you utilize this? We will come to know over here. Why is it important for you to be here? And how much committed you are to get desired result into your life? I know, basically I conduct this session for 4 hours, but here I have less time, but I'm trying to cover up many things by which you can get whatever you are looking for. See, my dear friends, this program is all about improving your communication. And there are 4 fears in the world. First of all, let's understand. First fear, arachnophobia, fear of spiders. Second fear, ophidiophobia, fear of snakes. Then trypnophobia, fear of injections. Then acrophobia, fear of heights. And the last but not the least, fear of public speaking, which is known as glossophobia. There are many people who have the fear of public speaking and they do not communicate properly. Now, what is the answer and solution for this? I'll say love public speaking, love communication, and practice, practice, practice. It has only this rule, no other rule. Okay. We have to practice, we have to communicate, we have to speak, we have to connect with people. Why public speaking is important, my dear friend? Public speaking is important because, see, we live in all these 6 phases of our life, okay? And what are those phases? First, personal life, then family life, then professional life, financial life, building trust and credibility, building influence. Let's understand all these 6 aspects in little detail. First, personal life. How many of you understand in personal life, communication is very much important? Type in the chat box, me. Type in the chat box, me. If you think it's important, please type in the chat box, me. Shabana ma'am, okay. Uday sir, good. What about others? Please, everybody, type in the chat box, me. Thank you for your response. Literally, in all these 6 aspects, if our communication is at the top, if we rock our communication, everything will be balanced. Otherwise, you see, in personal life, people suffer. Even children suffer and their parents suffer. As an employee, as a boss, as an adult, as an aging person, everywhere there is communication gap. In personal life, you can see nowadays how many divorce cases are coming. In India, it wasn't there. Divorce cases were not there previously. क्या झगड़े नहीं होते थे, लड़ाइयां नहीं होती थी? यस, झगड़े लड़ाइयां तो होते थे तब भी, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं आती थी जो आज आ रही है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बैलेंस था. See, family life, we can understand everywhere, whether children, whether as an adult or anybody. How is that? What type of communication we are doing in family? Do we speak with each other with love?
with respect. I remember one of my buaji, she used to call his son bhaiya. You know, from childhood, from 4 years, 5 years, I have seen he used to call his son bhaiya. उसको प्यार से वो भैया ही बुलाते थे. And today I see that son is so much obedient, very loving, good in study and everything. Why? Because she gave respect to the child. बच्चों को गालियां देना मारना ये तो था नहीं. हाँ, कभी गुस्सा आएगा तो पेरेंट्स हैं, दे विल स्कोल्ड, वो डांटेंगे, उनका हक बनता है. दैट्स ओके एंड फाइन. सो इन फैमिली लाइफ also you can see communication is at most important, because just imagine आपने कुछ बोला, आपके हस्बैंड ने नहीं सुना या आपको रिटॉर्ट किया, आपने बच्चे को बोला, बच्चे ने आपको उल्टा जवाब दिया, आप सासू माँ ने बहू को कुछ बोला और उसने उल्टा जवाब दिया, या उसने एक्शंस लिया, कुछ बोला नहीं. तो all these things makes mess, chaos. Professional life, everybody knows how are we performing in professional life. Communication is with, अगर आपका communication अच्छा है, you will get promotion, you will get lots of things, and you will get love and connection from employees, from boss and other people, and everything will be great and fine in your world. But if vice versa, अगर professional life में आपका communication अच्छा नहीं है, तो you are moving from home 8 a.m, you are reaching home by 8 p.m to 9 p.m, 7 p.m, and all day long एक बोलते हैं ना बैगेज लेकर के आते हैं, इसने ये बोला, उसने ये बोला, ऐसा हुआ वैसा हुआ. We are suffering very badly. Financial life, अब आप बोलोगे फाइनेंशियल लाइफ में कम्युनिकेशन कहाँ से आ गया ज्योति जी? Yes, what do we speak about our finances? If somewhere you have to speak something about your finances, what do you speak? It matters a lot. For example, what is your language? अगर आपका कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स कोई पूछता है आपसे कि कैसा चल रहा है, हाउ इज लाइफ, हाउ आर योर फाइनेंसेस, व्हाट, अरे चल रहा है सो बस दाल रोटी चल रही है. डू यू स्पीक सच अ लैंग्वेज, और यू से वाओ ऑसम, बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज ग्रेट, देयर आर गॉड्स ब्लेसिंग्स, माय ऑल द whatever is important thing that's getting managed by God's grace. How I'm grateful for whatever finances I have. How many of you use this language? Very few, very few. The answer is, I will say in 100, hardly 98%. For 2% to 5% people use positive language regarding finances. Most of them वही घिसी पिटी बात, अरे नहीं पैसे कहाँ बचते हैं, पैसे तो बिल भरने में ही चले जाते हैं, महीने के एंड में आते हैं और 2 से 5 तारीख 10 तारीख के अंतर्गत ही सारे पैसे यूज हो जाते हैं, कुछ बचता नहीं है. What language we are using for our finances? This language will determine our bank balance. Everybody remember this. This language, our language will determine our bank balance. Building trust and credibility, utmost important. When we build trust and credibility in people's life, in others' life, whether it is family, whether it is society, whether it is professional, whether it is any product or services, जो अगर आप लोगों की लाइफ में ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हो, किससे बिल्ड करोगे? अपने कम्युनिकेशन से. देन यू विल बी एबल टू क्रिएट मोर अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ मेंटल health, in terms of emotional health, and everywhere. Building influence. How are you building influence? Influence means आपको पता है आपसे कोई काम नहीं हो रहा, आप किसी और का नाम लो, काम हो जाता है. तो क्या आप ऐसे हो जो दूसरों का नाम लेकर के अपना काम कराते हो, या आपका नाम ऐसा है कि कोई और नाम ले और आपका काम हो जाए? Any field. Yesterday a friend of mine, he wanted to get a ticket. He called me. I sent a number of one of my vendor, who his friend also, he makes my ticket. Then he was saying that my friend, अरे नहीं तुमको बोला था, तुम दूसरे का दे रही हो. क्या भाई, तुम उससे मेरा नाम लो, your job will be done. Okay, the same happens. He was not believing. As he said, it was done. Okay, so why? Because I know I have the influence. If that person will take my name, the work will be done. So it is small aspects. If anywhere, wherever you are, क्या आप influence लोगों पे बना पाते हो? Are you able to establish the influence? Hi guys,
Is the language okay, Hindi and English, or only you want English? If you want English, type in the chat box E. If you want both, type in the chat box B. Both are good because we understand both the languages. All right. Okay. So I'll take care of that. Now, see, there are 5 most important models. Actually, there are 10, but I'm taking only 5. First, refine and shine your communication skill. And listen, it's not like born. ऐसा कुछ नहीं है कि जन्म से आपको मिला है communication. You can work on to your communication at any age, and it is important for everyone, whether it is 60-year-old person sitting over here, or you are 40-year-old or 30-year-old or 25-year-old, or you are 15-year-old. It is important for everyone. 15, those who are 15 years old, I will say, बाप रे, काम कर लो, पूरी जिंदगी बन जाएगी. नहीं तो तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे 25 कैसे निकल गए, तुम्हारी बचती रहेगी. Why? Because I have seen, if you talk about teenagers, especially who are under 25, I see if you give any work, they have only one thing, that is pride, ego, arrogance, and confidence. False confidence. False confidence means what? I can reply anybody. I can retort anybody. मैं किसी को भी मुंह पर जवाब दे देता हूँ. ये false confidence है भाई. अरे जवाब ऐसा दो कि तुम्हारा काम हो जाए. गालियां बकने और नाराज करने तो हर किसी को आता है. ऐसा कोई नहीं है जिसको कि नाराज करने ना आता हो. We had PhD into that. We don't need any other teacher for that. We need teachers for how can we speak by which other people can understand and they can act according to my wish, or if my job should be done, or they should work in my favor. That's the real meaning of communication. Okay. Now, so those who are in 25, very important. If you talk about after 25, utmost important. Why? Because after 25, maybe you will fall in love, or you will raise in love, then you will get married, then you will nurture children, then there must be, your life should grow, okay, professionally, personally, and emotionally. But what is happening, majority of cases, at what designation you are, how much money you are earning, this is all aside, but people are so much weak into their communication. ऐसे कितने लोग हैं कि दुनिया से तो बहुत बातें करते हैं, घर में आके बुत, they will not speak anything, they will be silent, they will not speak with their spouse. क्यों? ये मेरा बात सुनता ही नहीं, ये मेरी बात सुनती ही नहीं, इससे बोल के फायदा क्या? भैंस के आगे बीन बजाना, दोनों एक दूसरे को बोलते हैं. How many of you are relating this? और एक टाइम आता है कि अगर आप किसी की नहीं सुनते हो ना, तो सामने वाला जो दूसरा पार्टी है ना, वो एक बात अपने अंदर समझ लेता है, ये तो मेरी सुनते ही नहीं, ये तो मेरी सुनती ही नहीं, इससे बात करके कोई फायदा नहीं. अपना मुंह बंद करो, जो करना है वो करो, उनको अच्छा लगे बुरा लगे. अब आप बोलोगे ये क्या सिग्नल है? ये बहुत बुरा सिग्नल है. It is a very bad signal. क्यों? क्योंकि when you will blast, when you will get angry, when you will fight, then you will not fight for a day. जिस दिन झगड़ा हुआ, you will fight for all accumulation of your emotions which you did not express. जो emotions को आपने एक लंबे समय तक 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल नहीं बोला, आपने दबा करके रखा, फिर अगर कभी, क्योंकि एक बार देखो, ऐसा नहीं आप हमेशा बेयर करते रहोगे. आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ हस्बैंड एंड वाइफ. ओके, एक टाइम आएगा कि अभी आपको लगेगा अभी मुझसे नहीं हो सकता. आई एम नॉट गोइंग टू लिसन दिस गाय, आई एम गोइंग टू गिव हिम और गिव हर रिप्लाई. आज तो मैं इनको बता दूंगी, साला डिवोर्स होगा, वो चलेगा. बोल भी दो कि मैं काम करो, डिवोर्स दे दो, लेकिन अब इससे ज्यादा मेरे से नहीं चलेगा. ये सिचुएशन क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमें लगता है कि कम्युनिकेशन सीखने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो हम बोर्न है, बोलने आता है इतना बहुत है. अरे बोलने आता अगर इतना बहुत था तो आज आप अपनी ड्रीम लाइफ जीते. You would be able to live your dream life, my dear friends. But how many of us are able to live our dream life? Another thing, always remember, there are certain people, they have sugar coated tongue. वो जिससे भी बात करेंगे बहुत मीठा मीठा करेंगे, but उनके अंदर जो रहता है ना कुछ और रहता है. ऐसा भी कम्युनिकेशन मत करो. I will say be a master into your communication and speak from the heart.
not from only the words and not to manipulate people. मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको वो कम्युनिकेशन सीखना है कि आप लोगों को प्रेज करना सीखो. मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको ऐसा कम्युनिकेशन सीखना है जिसमें कि आप बोलो तो आपको भी लगे, yes, I'm happy with my words, with my language, whatever God has given. And when you speak, that should be soothing for the other party, whether it is a child, whether it is working professional, whether it is your family or anywhere. Another thing, when we meet with others means professionally or with a stranger or with anybody, how do we behave? We behave very politely, we behave very lovingly. But what happens when matter comes for our family? फैमिली की बात आती है तो वहां पे कैसे बात करते हैं? जैसे लगता है कि इनसे प्यार से बोलने की क्या जरूरत है, इनको तो रोज देखते हैं, इनसे तो रोज बात करते हैं, चलो इधर आओ. बच्चों से, चलो तुमने होमवर्क नहीं किया. अरे आप ये भी बोल सकते बेटा आपने होमवर्क किया. क्यों वो गुस्सा, एंगर आता है? आप जो कुछ भी करते हो अपनी फैमिली के लिए करते हो. इफ यू आर anyway managing your bread and butter with any kind of job or business or anything, why are you doing that? To keep yourself, to keep your family first of all happy, then yourself. All of us teenagers, अभी ये जो यंग एज वाले उनको छोड़ के जो 25 वगैरह वाले, वो बोलेंगे नहीं मैं मेरे लिए कमाता हूँ. हाँ वो अपने लिए कमाते हैं, दैट्स ओके. बट जो संस्कारी है वो पेरेंट्स को भी देखते हैं, अदर पीपल को भी देखते हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग, we all are doing for our family, our children. But what happens when we communicate? Why don't we communicate so lovingly, so carefully as we are communicating with outsiders? जो हम आउटसाइडर से बात करते हैं, जैसे हम बॉस से बात करते हैं या जैसे हम किसी थर्ड पार्टी से बात करते हैं कि थोड़ा सा भी टच हो गया सॉरी उसको बोल देते हैं. लेकिन घर पे हम कितनी बार सॉरी बोलते हैं? बाहर चलते हो किसी को धक्का लग गया, सॉरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी. But how many times you speak this at your home when you make a mistake? मैं सॉरी क्यों बोलूं? मैं नहीं बोलता, मैं सॉरी नहीं बोलता, मैं सॉरी नहीं बोलती. How many of you are relating this? If yes, type in the chat box, please. How many of you are relating this? If yes, type in the chat box, yes. I can't say this about me because I'm very easy. Sorry, whether it's at home. All right, no issue. I never ever say you have to always say yes. Do not become yes man. Okay, whenever you are not relating, type no. It's most welcome because this is the right communication. We all have to become a thought leader, and thought leaders are, they are very much open to express their views. This is my expression. This is my opinion. Maybe you may not correlate with somewhere. It's okay and fine, no issue at all. But what I'm saying, we all have to check it out. It may be also some people has everything great, or they are conscious about their communication when they are communicating with their family members or professionally. Okay, and if they are doing it, is great job. If we are not doing, we have to do. Even if we are aging, अगर हम वृद्ध भी हैं तो भी हमें अभी भी इम्प्रूव करने की जरूरत है. अभी भी भाई ऐसा नहीं है कल मरने वाले हैं, ठीक है ना? अभी सालों हम जीने वाले हैं. वो साल 5 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, 15 साल हो सकते हैं, 20 साल हो सकते हैं. अभी भी अगर हमने राइट कम्युनिकेशन सीख लिया तो हमारे जो बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए थोड़ा आपके साथ कोप अप करना आसान हो जाएगा. देन पावरफुल स्किल्स ऑफ निगोशिएशन एंड परसुएशन या ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. अगर आप प्रोफेशनली आपको कहीं प्रेजेंटेशन वगैरह देना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. ओके, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, हाउ you have to express, what points you are going to take. Then powerful skill of negotiation and persuasion. You must have negotiation and persuasion skill also. My negotiation skill is very good, very good, very good, very good. Literally, whatever I want, whenever I want, in whatever price I want, I make it. Another thing, if I start building relationship with anybody, I pursue it. Pursue it means, very lovingly, very carefully, while showing interest in that person, and by helping and nurturing that relationship, I pursue. I don't pursue for the sake of, my selfish end, not at all. I check it out where he needs my help, where he wants my support. I stand and fulfill. And then what happens? I get whatever I want. People does not support you because you ask for help. People support you because you help them. अगर आप लोगों की हेल्प करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प करेंगे. लेकिन अगर आप बस उनसे मदद के लिए गुहार लगा रहे हो या उनके पीछे पड़े हो, बट आप
की केयर नहीं करते हो, then they will not stand with you and they will say maybe openly also, अरे मेरे से नहीं होता, चलो हटो. Authority and personal brand building, if you are a trainer, coach in such a field, that time, my dear friends. And anyway, even if you are a, I'll say, if you are the most influenced person in your family, if you are authority in your family, then also it is very much important. Aapki personal brand means if you have a business or something, you have personal brand, then what kind of brand you have established, and what kind of authority have you established among your employees? And even if you are a family man, what kind of authority or influence you have established in your family? आपकी फैमिली में आपका नाम आने पे लोगों को क्या लगता है, हिटलर या अरे मेरी मम्मी मेरे पापा? नहीं तो बहुत जगह मेरे पापा हिटलर है, मेरी मम्मी हिटलर है. Many of them say that. How to bring impact and influence in public? If we are communicating in public, how can we create influence? This is very much important. Now, my dear friends, if you will see a fact, why communication skills are important. See, I have taken many skills like communication, organization, teamwork, always punctual, critical thinking, social skills, creativity, interpersonal communication, adaptability, friendly personality. And you can see I have marked here कौन सी चीज कितना परसेंट इंपॉर्टेंट है. And here you will see communication skill has more number 57.9% and rest of them 56, 55, 55, 54, something like that. Communication skill is something which has more, you can say the numbers 57.9 means it is utmost important skill, while in comparison to organization, teamwork, always punctual, critical thinking, social skills, creativity, interpersonal, adaptability, friendly personality, and anything. Another thing, do you know, my dear friends, if you will check it out, there are doctors who mend money and there are doctors who struggle for their survival. There are engineers who makes lots of money, who creates abundance, and there are engineers who struggle for survival. There are chartered accountants who makes lots of money, they have abundance, and there are chartered accountants who struggles for survival. Means each and every field, if you talk about corporate and employees, so there are employees who creates a lot of abundance in terms of money, in terms of relationship everywhere, and there are people who work with different organization and they struggle for survival. They do not get promotion, lots of things happens. Why? Because somewhere their communication is responsible for that. In many cases, whether you are a doctor or an engineer, your communication matters a lot. Now you will say, engineer को communication की क्या जरूरत पड़ती है? अरे अगर वो कोई मैप बनाता है, कुछ भी बनाता है, तो उसको explain तो करना पड़ेगा ना भाई. उसने क्या बनाया है, उसका क्या मतलब है, उससे क्या लोगों को बेनिफिट होगा, उस चीज को आप अपने मुंह से ही बयां करते हो. A doctor when he speaks with his patients, ये दर्शाता है कि वो पेशेंट की केयर करता है या पेशेंट को ऐसे ही कैजुअली लेता है और पैसे बना करके पेशेंट को किधर भी झटका मार देता है. It means, my dear friends, and teachers, take the example of teachers. जिस टीचर का कम्युनिकेशन बच्चों के दिल को छूता है, वो टीचर हमेशा फेवरेट टीचर होता है. और एक कम्युनिकेशन टीचर का और होता है जिससे कि बच्चे भी हर्ट होते हैं, फिर उसको बोलते हैं अरे बाप रे उनके लेक्चर में कौन जाएगा, भागो, लॉट्स ऑफ थिंग्स. मेनी ऑफ अस हैव डज दैट. हर स्कूल कॉलेज में ऐसा होता है. एक टीचर हमारा फेवरेट होता है, एक टीचर से हम भागना चाहते हैं. How many of you have experienced this? I have experienced. Even in my PG post graduation, एक प्रोफेसर थे. अगर एक्चुअली हमें पता था वो सैटरडे संडे नहीं आते क्योंकि उनका गांव बिहार में था, वो बिहार जाते थे, तो हम भी जहां तक सैटरडे को गायब हो जाते थे. लेकिन उसके लिए हम फ्रेंड्स को बोल के रखते थे, अगर इन केस वो आ गए तुरंत मुझे कॉल करना, मैं चली आऊंगी. मेरे घर से, मतलब मेरी रेजिडेंस से यूनिवर्सिटी केवल 10 to 15 मिनट्स थी. मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड कि चलो वो लेट आए, बस लेक्चर का टाइम हुआ उसके 10 मिनट पहले और हमें पता चला, हम रेडी हुए और भाग गए. अनदर थिंग, जैसे उनका लेक्चर फिनिश हुआ, जैसे वो एक डोर से बाहर निकलते, हम दूसरे डोर से बाहर भाग जाते क्योंकि नेक्स्ट प्रोफेसर का लेक्चर पसंद नहीं था, लगता था हम चट जाते हैं 45 मिनट्स के लिए.
और उसके बाद एक लेक्चर लेके घर भाग गए. Many times I have done this. Why? Because someone's communications influence you, and someone's communication you feel like drained, you feel like तुम्हारी एनर्जी चली गई. Is it so? If yes, please give your opinion in the chat box. Now, my dear friends, why being a great public speaker is a competitive advantage? If you are a great public speaker, then I will say it's a great competitive advantage also. अगर आप अच्छे पब्लिक स्पीकर हो तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. क्यों? क्योंकि हर एक इंसान अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं होगा. Your public speaker don't understand public speaker means a stage, 500 people, 1000 people are speaking, and then it means public speaker. No. Public speaker means anybody who speaks under 10, 50, 20, 100 people. जो 10, 20, 30, 40, 50 लोगों के बीच में बोलते हैं वो सब पब्लिक स्पीकर की ही कैटेगरी में आएंगे. अगर घर पे भी हमारे 100 लोग हैं और 100 लोगों के बीच में हम बात करते हैं तो वो क्या है? दैट्स पब्लिक स्पीकिंग. तो पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये ना समझ लिया करो कि स्टेज, हाथ में माइक और 2000 पीपल सामने. नो. अगर आपके घर में बर्थडे पार्टी बनाई जा रही है और आपको किसी ने बोला आप गाना गाओ और आप अच्छा गाना गाते हो, then you have to sing. That's the public speaking. और somebody said, अरे आप तो मम्मी हैं, आप तो दादी हैं, आप अपना ओपिनियन दें, then you have to open your mouth. अरे your brother and sister say something about your brother's birthday, you have to open your mouth. That's public speaking, right? And while doing all these small things, then you become a public speaker. For example, I remember when I was in 6th standard, then the 15th August, how I started my public speaking. 15th August came. On 15th August, my class teacher requested me to give a speech. Then I said, I was good in speaking, but I was not prepared. Then I said, I'm not prepared. Then there was essay book. In that essay book, there was 15th August public, one of the lecture. And then she said, go and prepare this. And I went and prepared this. My public speaking journey started from that. Then on every 15th August, my teacher says that you have to give your, one of the speech. Then I said, I'm not prepared. Then she said, पिछले वाला बोल देना, पिछले वाला बोल देना. और वो पिछले वाले में थोड़ा add on कर करके I did it till 10th standard. Right. And the journey started. It means what? Even on small occasions, when you speak, it presents a lot. Even if you're speaking in front of 10 to 20 people, 100 people, 50 people, it's a public speaking part. Nothing more than that. Let me see how much time do we have more. Okay, we have. How communication and public speaking skills result in influence and authority. My dear friend, let's understand. What is the result of communication public speaking? It must create influence and authority to all of us. First, if you are a good public speaker or if you are a good communicator, public speaker मतलब ये मत समझो कि आपको ट्रेनर नहीं बनना, कोच नहीं बनना, तो आपको जरूरत नहीं बाबा. आपको अपने घर में तो अपनी बात रखनी है ना. You want to keep your things in front of your family and you want yes. You want to keep your thing in front of your boss and you want yes. You're requesting for your promotion and you want yes. You're requesting for your marriage to your friend, to your father and mother with your choice of girl or boy, and you want yes. That's communication. And your family is completely against it. नहीं, इस जात में नहीं शादी होती, बात तुमको समझती नहीं है. अब आपको वहां पे कैसे आगे बढ़ना है, how you have to communicate, what you have to say, by which family की भी feelings जो है hurt ना हो, और उनको हम शुरुआती दौर में एक ही बार में नहीं मना पाएंगे, लेकिन 10, 20, 30, 40, 50, 100 बार प्रैक्टिस करने के बाद उनको हम अपनी बात से कन्विंस कर ले, बगैर इसके कि नहीं तुम नहीं मानोगे तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो लेके भाग जाएंगे, हम तो शादी करेंगे ही, क्या फर्क पड़ता है. डोंट डू दैट. ओके, फैमिली है, मान जाती है. It enables you to put your point of view across. आप अपने point of view को लोगों के सामने रख सकें. फॉर एग्जाम्पल, पता है आजकल nowadays, my dear friends, we are not able to give our point of view. Here I would like to give an example. You can see in family,
Some of our siblings, some of our family members, they live very beautiful life. They live very comfortable life. They live very easy life. How? They don't compromise. And they have set up standards. They will say, देखो ये काम मुझसे नहीं होता, मैं नहीं करूंगा. And the same work, that compromising work, or you can say that lower work or that draining work, another person does who is very good by nature, who is very understanding and everything, but he does that work जो कि किसी और को नहीं पसंद है. Now you will say, is it right or wrong? I will tell you one thing, my dear friends. For example, I will tell you, I don't like household work. Household work I don't like from my childhood. And my mother, she has never ever made me expert into that work. She always says that चलो ये काम तुमको करने की जरूरत नहीं है. I have given you study, you do study well. I'm happy with that. I don't want you have to become a mediocre and you have to do this. I'm so sorry. My mother's opinion was that. Okay. Later on, when I became adult, then she realized कि मैं तो बिगड़ी हुई पूरी. फिर बड़े होने पे भी काम नहीं करती. Then she used to say, बाप रे मैंने ही तुमको बिगाड़ा, बिगाड़ना नहीं चाहिए था. तो मैंने बोला अभी तो बिगाड़ दिया, अभी क्या कर सकते हो. बट हाँ, जब कॉन्शियसनेस आया कि नहीं मुझे अपना देखना चाहिए, then I started doing whatever is important for me. But do you say, do I love household work? I'm a very good housemaker? Not at all. काम चलाओ. खाना, if I will hire cook, my husband will be not happy, so I have to cook. Okay. For other work, there is maid, but cooking I have to do because my husband will never ever prefer. Okay. Then he will say, कोई बात नहीं, रहने दो, फिर होटल में ही खा लेंगे. उनको बाहर के वाइब्रेशन के खाने नहीं पसंद, इसलिए मुझे बनाना पड़ता है. बनाती हूँ, कोई बात. वो उसके लिए ये भी नहीं कि वो मेरे लिए एक पनिशमेंट है. But what I'm telling you, what happens into this? When I was not good in household work, so in marriage or something, if any celebration or something happens, so in those days घर के सब लोग मिलके काम करते थे. तब कुक वगैरह नहीं आते थे बाहर से. And I remember nobody offers me that cooking work. कोई मुझे वो काम देता नहीं था, और अगर मुझे देता भी था तो मैं साफ बोलती थी मुझे नहीं करना है. उससे क्या ट्रैक रिकॉर्ड बना, मुझे वो काम कोई देता ही नहीं है. क्यों नहीं देता है? अरे इसको आता नहीं है, करेगी तो बिगाड़ देगी और ये करेगी ही नहीं. मेरा सेटअप स्टैंडर्ड ये है. कुछ लोग ऐसे जो उस काम को करते थे, सारे काम उनके खाते में जाते हैं. अब आप बोलोगे अच्छा है बुरा, मैं बोलूंगी बिल्कुल अच्छा नहीं है. आप घर पे भी पिसते हो, बाहर भी पिसते हो, चारों तरफ पिसते हो, कहीं पर भी आपको रिलैक्स नहीं है. और वो अच्छा बनने के लाइसेंस से कुछ होता नहीं है. आप भी मेकअप वेकअप करके गए अच्छे खासे बन के, तो आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा कि जा करके मैं आटा गूंथू, पूरियां सेकू और मेरा पूरा मेकअप जो है पूरियां निकालने में बाहर निकल जाए. Nobody wants that. अभी तो वैसा नहीं है. बट अगर आपने राइट कम्युनिकेशन नहीं सीखा तो ये करना पड़ेगा. अभी आप बोलोगे सपोर्ट एंड ऑल, देखो बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, करो. बट व्हाट आई एम सेइंग, डोंट लिव अ वेरी मच कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ. और यस मैन, यस वुमन, ओके, यस फॉर एवरीथिंग. डोंट बिकम अ यस मैन. यस मैन मत बनो हर चीज के लिए हाँ कर देना अच्छा बनने के लिए. देखो अच्छा आप कैसे बन सकते हो. यू कैन बिकम good, or you can get your respect when you are confident, when you have certain values into your life, when you know how to respect others, when you know right communication. And you know some people कुछ नहीं करते, बहुत प्यार से लोगों से बात करते हैं, बातों से लोगों की बहुत इज्जत करते हैं और उनकी बल्ले बल्ले है. सब लोग वो काम नहीं करते, अपना काम भी किसी और से करवाते हैं, फिर भी सारे लोग उनको नतमस्तक होते हैं. अरे नहीं नहीं नहीं, वो किसी का दिल नहीं दुखाते. तुम क्यों दुखाते हो? तुम भी मत दुखाओ, कोई जरूरत नहीं है दुखाने की. राइट. सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इनेबल्स यू टू पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस. और दूसरी बात, अगर आपने राइट कम्युनिकेशन सीखा तो क्या होगा कि आप किसी के भी सामने, वो आपके पेरेंट्स हो, वो आपका बॉस हो, वो आपके टीचर्स हो, वो आपके ग्रैंडफादर हो, एनीवेयर, पर्सनल, प्रोफेशनल, इमोशनल, कोई भी रिश्ता हो, वहां पे आप अपनी बात को रख पाओगे. नहीं तो मान लो आप किसी लड़की को बहुत प्यार करते हो, किसी लड़के को बहुत प्यार करते हो, आपको लगता है मैं इसके बिना रह नहीं सकता, लेकिन आपने उसको कभी बोला ही नहीं. आपने उसको कभी बोला ही नहीं. अब क्या होगा ये बताओ? उसको तो पता ही नहीं आपके दिल में क्या है. कोई और आया एक्सप्लेन किया, अरे मैं बहुत प्यार करता हूँ, प्यार भी नहीं करता था, फ्लर्ट करता था, लड़की उसकी हो गई, लड़का उसका हो गया. राइट.
सो यू मस्ट हैव दैट डेयर टू कीप योर पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आपने किसी से कोई बात बोली तो ठीक है, सामने वाला हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, इट्स ओके, वो हमें मारेगा नहीं, हमारा मर्डर नहीं करेगा, ठीक है. देन इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस टू चैलेंज ट्रेडिशनल पॉइंट्स ऑफ व्यू. और अगर आपको राइट कम्युनिकेशन आता है तो यू हैव पावर टू चैलेंज ट्रेडिशनल पॉइंट्स ऑफ व्यू. टेक द एग्जांपल ऑफ राजा राम मोहन राय. पहले when a husband dies, then his wife has to go into the pyre of the husband. अगर पति मर गया तो वाइफ को जो है पति के साथ सती प्रथा का प्रचलन था. सती प्रथा मतलब पति की जो फायर, जो अग्नि जलती थी, उस पे जाकर के जलना था, मतलब स्वेच्छा से, विलिंगली. लेकिन ऐसा नहीं होता था. बहुत बार देखिए कुछ लोग जो बड़े होते थे, इतना भी सेक्रीफाइस लोगों में था कि वो खुद जाकर के चिता पे जल जाते थे, ऐसे वो अपने आप को बनाए थे. लेकिन कुछ जो कम एज की लड़कियां होती थी, या कुछ लड़कियां ऐसी होती थी जिनको ये करने में डर लगता था, नहीं करना चाहते, तो वो रोते थे, वो बहुत चिल्लाते थे. और एक बार राजा राम मोहन राय ने देखा कि ऐसी घटना हो रही थी, और एक स्त्री है वो भाग रही है, लेकिन उसको पकड़ के बांबू से, मतलब वो चिता के अंदर फेंका, धकेला गया उस लड़की को, और वो जली. तब उन्होंने शपथ ली, तब वो बहुत छोटे थे, मैं इस प्रथा का अंत करके रहूंगा भारत देश से. और सती प्रथा का अंत उन्होंने किया, अगर मैं नाम सही ली तो. ओके, सो व्हाट, क्योंकि उनको ये बात है कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है. he said that, he thought that. Another thing, my dear friends, tell me, अगर take the example of 3 years back, 3 साल पहले अगर ये बोला जाता है, अरे पता है वेबिनार में बैठ करके, जूम पे बैठ करके सब कुछ होता है. आई रिमेम्बर 3 years back, I follow one of my trainer, Dan Locke. Dan Locke used to conduct webinar. Dan Locke webinar conduct किया करते थे उस टाइम भी, 4 years 5 years back. और वो उसके बारे में बात कर रहे थे, तो मैं सोचती क्या बात करिए, ये विदेशियों का काम है, इंडिया में थोड़ी ना फिजिबल है. बट जब कोविड आया तो कैसे सारे काम, जब सब अंदर बैठ के नहीं, घर से ही करेंगे. और you can see lots of things. Now we all are sitting at our home with our comfort zone, and my dear friends, we are connecting with each other. लेकिन एक बात बताओ, इसको आने के लिए ये इंटरनेट तो पहले भी था, सब कुछ पहले भी था, तो ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू ही हमको नहीं आया. दूसरी बात, चलो पापा मम्मी ने शादी के लिए ना बोल दिया, बट हम लड़की को बहुत प्यार करते हैं, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं ना. आई हैव सीन पीपल कि नहीं, लव मैरिज नहीं कर देंगे और अरेंज मैरिज ऐसी करते हैं कि पूछो मत. मतलब इतनी घटिया, इतनी फालतू की लड़की या लड़के की जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है. 2 bullocks yuck together, जब 2 bullocks एक उधर से एक पर कहीं से लाया, दोनों को अंदर बांध दिया, अभी तुम रहना है तुमको साथ में. जो थोड़े ओपन है, ओपन माइंड के, वो बाहर निकल लेंगे, नहीं तो तुम मरो कटो, क्या फर्क पड़ता है, हमने तो शादी करा दी, अब आगे का तुम संभालो बच्चे और अपनी जिंदगी. इट शुड नॉट हैपन. इट मीन्स व्हाट, इट्स नॉट अबाउट लव अफेयर ओनली, इवन इट्स अबाउट आप किसी फील्ड में जाना चाहते हो, आपके पेरेंट्स आपको किसी और फील्ड में भेजना चाहते हो. फॉर एग्जांपल, यू वांट टू बिकम, you want to become, let's consider, an artist, but your parents want you have to become a chartered accountant. Again you have, अगर आपने बोला नहीं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा, तो कुछ नहीं, पैसे उनको देने हैं, वो आपका जो है सीए में जाकर के एडमिशन कराएंगे, फोर्स करेंगे तुमको पढ़ना है. You have to keep your point of view over there, right? So my dear friends, it all happens. Okay, now इट्स गिव यू द कॉन्फिडेंस टू चैलेंज ट्रेडिशनल पॉइंट्स ऑफ व्यू. तो आपको वहां पे कॉन्फिडेंस, अगर आपको अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन करने, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस ट्रेडिशनल पॉइंट्स ऑफ व्यू, जहां पे मुझे लगता है मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ, लोग मानते हैं, मैं बोलती हूँ आई एम नॉट एग्री विद दिस एंड आई डू हैव these points. इट कीप्स यू आउट फ्रॉम द क्राउड. और हाँ, राजा राम मोहन राय ने फिर लड़कियों का फिर से पुनर्विवाह की भी प्रथा को शुरू किया था. तो वहां उन्होंने मतलब he fought for that, he established that point of view. He killed that traditional point of view, right? It keeps you out from the crowd. यह आपको भीड़ से अलग रखेगा, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनाएगा, आपको भीड़ से अलग रखेगा. It gives you visibility and it will give you visibility also. अरे उसकी बात मत करो, मस्त है यार, वो बात करते हैं तो देखते बनता है, जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो देखते बनता है. Means your presence will create a charisma over there. आपका प्रेजेंस करिश्मा लेकर के आएगा, लोग आपसे बात करेंगे और जस्ट मजा आ जाएगा उनको. अरे इससे तो बात ही करते रहो तो पूरी नहीं होती है, दिल नहीं भरता है.
ऐसे बहुत बार लगता है हमें, कुछ लोगों से हम बात करते हैं, हमारा जी नहीं भरता है, हम करते ही जाते हैं। इट गिव्स क्रेडिबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस, और जब ये चीजें आपके अंदर है तो इट विल गिव यू क्रेडिबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस, एंड इफ यू हैव क्रेडिबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस देन यू विल बी एबल टू enable more people into your life. क्रेडिबिलिटी इन्फ्लुएंस का मतलब समझा कि आपके नाम में अगर आपने बोल दिया ये काम मैं करूंगा या मैं यहाँ पर हूं, तो लोग कहेंगे अरे मैं भी जानता हूँ वो है, अरे उनसे मिल करके बहुत अच्छा लगेगा, अरे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा, अरे उनसे मिलने पे अपना काम हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड क्रेडिबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस। अनदर थिंग, एक और क्रेडिबिलिटी और इन्फ्लुएंस होता है, अरे उसके पास मत जाना, कुछ नहीं होगा, वो ऐसी मतलब वो वैसे ही फालतू में भोंकता रहता है, कुछ करता नहीं है। ऐसे भी आपको आंसर्स कुछ जगहों पे मिलेंगे, अरे उनकी बातों में मत आना, भरोसे के लायक आदमी नहीं है वो, मेरा भी उसने बोला था कोई काम किया नहीं, पैसा वेस्ट हो गया। सच टाइप ऑफ थिंग्स यू विल ऑल्सो गेट। अभी आपको किस कैटेगरी में जाना है, यू हैव टू डिसाइड। यस, कुछ डेंजरस मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं कम्युनिकेशन और स्पीकिंग को लेकर के। वो क्या है? पहला, कम्युनिकेशन जस्ट अबाउट स्पीकिंग वेल। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अच्छे से बात करना। बताती हूँ, पहले मेरे को भी ये मिसकंसेप्शन था। when I was 14 years back I came in Mumbai 13 to 14 years back, और आने के बाद एक आध साल बाद मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसे ही गई, तो वहां पे जो ट्रेनर था ना, वो बहुत अच्छा ट्रेनर है, पिछले 20 सालों से माइंडसेट का ट्रेनर है, बहुत बढ़िया बोलता है, बहुत एकदम शुगर कोटेड टंग उसकी है, बहुत बढ़िया बोलता है। अब आप बोलो बोलते हैं नहीं, मैं बोलता है बोल रही हूँ। एक टाइम था कि आई हैव लॉट्स ऑफ रिगार्ड फॉर हिम, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट अ टाइम केम कि वो कम हो गया। पता है क्यों? क्योंकि वो जो बोलते थे वो करते नहीं थे। वो बोलते कुछ थे, करते कुछ थे, और वो जो बोलते थे हम वो करते थे, तो वो करने के बाद हमें ये पता चला इन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है। नॉलेज सेंस एंड अदर थिंग्स। देखो, अभी का जो टाइम है, अभी का जो कल्चर है, वो ये है, पीपल रेस्पेक्ट यू फॉर योर नॉलेज, फॉर योर एक्सपीरियंस, फॉर योर गुडनेस, नॉट टू हैव अ शुगर कोटेड टंग ओनली। अब बस बहुत मीठा मीठा बोलो उसके लिए लोग आपको पैसा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप जो बोलो उस राह पर चलो, आप वो व्यक्ति हो, आप वो पर्सनालिटी हो, देन ओके एंड फाइन। देन व्हाट आई फाउंड इन दोज इयर्स, वो बंदे ने बहुत झूठ बोला उस ट्रेनर ने, ठीक है। फिर जब हम पहले तो बहुत हम उनको मतलब आइडल मानते थे ऑल दिस, बट व्हेन आई फाउंड नहीं, उनकी बातों में दम नहीं है, झूठ बोलते हैं, तो बाद में, क्योंकि उनको तो नया नया क्राउड मिलता था, हम बराबर उनको रिपीट करते थे। आई एम नॉट कास्टिंग एनी, आई एम नॉट टेकिंग नेम, दैट्स व्हाई, बट आई एम टेलिंग यू व्हाट हैपेंस। कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग वेल। आज भी वो बहुत बढ़िया बोलते हैं, वो बोलेंगे, आप उनको सुनोगे तो आपको लगेगा अरे वाह क्या बंदा है, कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, कितना सही बोल रहा है। बट हमको पता है वो कितना सही बोल रहा है, कितना गलत। हमें पता है कि वो अपने कम्युनिकेशन में 80% बंदा झूठ बोलता है, 20% सही बोलता है, और बहुत बड़ा स्पीकर भी है, ठीक है। दुनिया ऐसी है, दुनिया के लिए मे बी वो पहली बार उसका फेस देख रही है, पैसे दे देगी, इट्स ओके एंड फाइन, बट व्हाट आई एम सेइंग, you won't be able to create long lasting impact in right people. राइट लोगों के बीच में आप लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं लाओगे अगर आप एक रियल कम्युनिकेटर नहीं। और रियल कम्युनिकेटर कहां से आता है? when you speak, you have not to speak through your words, you have to speak through your feelings, you have to speak through your emotions, and you have to speak through your heart and soul. If you are communicating, if you are promising something, or if you are giving promise to anybody or to get his work done, then you have to give your 100% effort. Now I have teachers, I have mentors. What they speak, it means. वो जो बोलते हैं उसका मतलब होता है, वो अपनी जी जान से एनर्जी लगा देते हैं उसको और काम को पूरा करते हैं। और वो उस लेवल पे है, जब हम उनसे बात करते हैं, जब उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, जब उनसे हम सीखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, उनका वो लेवल है, इनसे हम कुछ सीख सकते हैं। बट मैंने जर्नी जहां से स्टार्ट की, मैं उस पाठशाला में हम नहीं जाती उस पाठशाला में हम नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हमने देखा उसने अपने आप पे काम ही नहीं किया बाद में, तो हम कहे भाई माफ करो, अभी अपने रास्ते अलग है। देन good communication requires good grammar, language skills and good accent, not at all.
आपका ग्रामर बहुत अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज की स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्सेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, अमेरिकन होना चाहिए, ब्रिटिश होना चाहिए, ये ना होना चाहिए, नथिंग, न्यूट्रल एक्सेंट इज ओके। तो अच्छा क्या होना चाहिए? योर इंटेंशन मस्ट बी ग्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल। Whatever you want to do for the community, it must come from your heart, not only from your mouth. ये लास्ट पॉइंट ले रहे हैं। कम्युनिकेशन दैट रिजल्ट्स इन सोशल हार्मनी इज गुड। फिर एक बात आती है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब हम बोले तो कोई किसी को भी बुरा नहीं लगे। सोशल हार्मनी मतलब असामंजस्य नहीं आना चाहिए, मतलब सब कोई मेरी बात से सहमत होना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ऐसे लोग होंगे जो हमारी बात से असहमत भी होंगे, एंड इट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल, क्योंकि सबके ओपिनियन सेम नहीं होते हैं। और जो लोग असहमत होंगे, फिर आपको भी समझ में आएगा कि ऐसा तो नहीं आप में कोई गलती है, या आपके कम्युनिकेशन में या आपके मैटर में कुछ और एड ऑन करने की जरूरत है। उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू को आपको लेना है, समझना है। एंड सोशल हार्मनी इज ओके, सोशल हार्मनी इज ओके। समझे आप ना? अगर सोशल हार्मनी नहीं है तो भी सही है तो भी सही है। मतलब सभी लोग सहमत है, इट्स ओके, नहीं सहमत है तो भी सही है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत बोल दिया, बिल्कुल नहीं गलत बोला। लॉजिक एंड फैक्ट्स परसुएट पीपल, और आपकी बातों में लॉजिक और फैक्ट्स होना चाहिए। जब लॉजिक और फैक्ट्स रहेगा तो उसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा होगा। अगर मैंने राजा राम मोहन राय का एग्जाम्पल दिया, आपको भूलेगा नहीं, अरे ऐसा भी था, जलते हुए चिता में किसी और जिंदा आदमी को धक्के दे करके डाल देंगे। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोगों ने। और वी नो that time sati pratha, and the movie that we have seen, that movie also, where lots of queens they went for sati pratha, क्योंकि उसने अटैक होते थे तो बहुत सारे राजा लोग जो बदतमीज ये मुस्लिम्स वगैरह के राजा रहते थे, वो लोगों को लेके भी जाते थे। दूसरा ऐसा नहीं, मतलब जो भी अटैकर रहता था, तो दैट्स नॉट फेयर एनीवे। सो व्हाट लॉजिक एंड फैक्ट्स परसुएट पीपल। लॉजिक और फैक्ट्स दोगे तो वो क्या करेगा, लोगों को परसुएट करेगा। द मोर इंफॉर्मेशन द बेटर, द मोर इंफॉर्मेशन द बेटर। आप जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन दोगे, जितना आपको डीप नॉलेज रहेगा, उतनी अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बोर कर दो, आउट ऑफ टॉपिक चले जाओ, नॉट एट ऑल। पीपल वांट टू बी मोटिवेटेड, और लोग मोटिवेटेड बने रहना चाहते हैं। वो आपकी बातों के बाद, देखो दो तरीके के लोग होते हैं। आप कुछ लोगों से बात करके आपको जान आती है, आप मोटिवेट, अरे वाह मजा आ गया, इसने किया मैं भी ऐसा करूंगा। और देयर आर सर्टेन पीपल कि उनसे बात करने के बाद आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, आपको लगता है धत्तेरी के अपने से कुछ नहीं होगा, कुछ अपने बश में नहीं है, कुछ अपने हाथ में नहीं है, सब भगवान के हाथ में है, कुछ करके मतलब नहीं है, चलो सोते हैं खा पी करके। Many time it happens, we feel drained with such people. बिल्कुल लास्ट कैटेगरी में मत जाओ, ऐसा व्यक्ति मत बनो कि तुमसे बात करने के बाद सामने वाला सर पकड़ ले, अरे बाप रे किस नेगेटिव इंसान से पाला पड़ा, इसने दिमाग खा गया मेरा। Literally sometime it happens. I have experienced, and whenever I experience, I shut the mouth of the person, or I change my place. I say I'm in hurry, I can't connect more. I recently met with a friend of mine, and एक्चुअली वो फ्रेंड नहीं है, वो स्टूडेंट है समवेयर, बट आई सी शी इज वेरी मच नेगेटिव। उसका सिचुएशन भी कुछ है वैसा, बट सिचुएशन उसका कैसे सुधरेगा, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिविटी को फोकस करती है। मैंने उसको बहुत सुनाया, शी कॉल्स मी दीदी, बट लिटरली इस बार मैंने उसको बहुत सुनाया। मैं बोली देख तू अपनी स्टोरी चेंज कर, तेरी स्टोरी वही घिसी पिटी जो आज के 4 साल 5 साल पहले थी, 6 साल, आज भी वही है। until you will not change your story, things will not change। अब स्टोरी चेंज का मतलब क्या होता है ये बता करके एंड करते हैं सेशन को, और फिर आप लोगों का 1-2 क्वेश्चन ले लेंगे। स्टोरी मतलब मेरे साथ ये हुआ, मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया, मेरी सासू माँ ने मेरी इज्जत नहीं समझी, मेरे बच्चों ने मेरा रेस्पेक्ट नहीं किया, मेरे माँ बाप ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे पत्नी ने मेरा साथ नहीं दिया, ये स्टोरी। अब मैं बोलती हूँ इस स्टोरी को चेंज करो। कैसे? मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? अभी तक तो तुम रो रहे थे, वो तुमको नीचा दिखाना चाहते हैं, वॉट एवर, बट इस स्टोरी को चेंज करो। उन्होंने क्यों मेरा साथ नहीं दिया?
उन्होंने मेरा साथ इसलिए नहीं दिया ताकि मैं स्ट्रांग बनूं, उन्होंने मेरे साथ इसलिए नहीं दिया ताकि मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहूं, उन्होंने मुझे बोला कि तुम मुझसे पैसे बार बार मांगते हो, तुम कुछ करो, पैसे कमाओ, ताकि मे भी उनके मन में ऐसा हो कि कल को मैं चला जाऊं तो ऐसा ना हो कि ये पूरी टूट जाए और कुछ करने के लायक ना हो, ये पूरी बिखर जाए। दैट्स वाई मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बहुत हार्श रहे। ठीक है, क्यों हार्श रहे? इसलिए ताकि तुम स्ट्रांग बनो। योर पेरेंट्स वर हार्श विद यू, दे मे बी, you know, like Hitler or whatever you say, because they wanted to see you to be in discipline, because they know the world is not going to show any mercy on you। उनको पता था कि दुनिया तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं दिखाने वाली है। जब तक इसको मैं रफ एंड टफ नहीं बनाऊंगा, इसका गुजारा नहीं होगा। इसका जो स्वभाव है, इससे तो दुनिया इसको चीट करके चली जाएगी। एवरी स्टोरी, जो भी नेगेटिव स्टोरी है आपकी, उसको बदलो। मेरा हस्बैंड मेरी नहीं सुनता है ताकि मैं ये समझ सकूं कि कोई नहीं सुनता है तो उसका पेन क्या होता है, और मुझे अपने कम्युनिकेशन में, मुझे अपने इमोशंस पर और भी ज्यादा कंट्रोल लाने की जरूरत है। मैं दूसरों की छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाता हूँ, हर्ट हो जाती हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं अपने आप को कमजोर महसूस करती हूँ, अपने आप को रिजेक्टेड महसूस करती हूँ, नेग्लेक्टेड महसूस करती हूँ। और मुझे इन नेगेटिव, अपने जो जो नेगेटिव हमारे इमोशंस है, इसके ऊपर मुझे विजय प्राप्त करनी है। आई हैव टू बी अ वुमन ऑफ सेल्फ स्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड आई मस्ट हैव अ लॉट ऑफ करेज इन मी। इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगर आपने किसी के साथ, अगर आप किसी के बात से हर्ट हो गए, आपके आंख में आंसू आए, तो बहुत हर्ट मत हो भाई, कुछ नहीं। आई रिमेम्बर अ डे आई वेंट इन माई गुरुज प्रोग्राम, और वहां पे सब अच्छे लोग आते हैं। एक बार के प्रोग्राम में एक महान महिला आई थी, उसने मेरे को बिना मतलब के एक दिन टारगेट किया, मैं भाग गई, कुछ नहीं बोली, बिकॉज आई वॉज इन माई गुरुज होम, आई डू नॉट वांटेड टू क्रिएट एनी क्योस एंड मेस। मैं बोली गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। नेक्स्ट डे फिर उसने मेरे को बहुत बुरा सुनाया, बहुत बुरा सुनाया, बिना किसी गलती के। गलती किसी और ने की थी, उसका गलती किसी की भी नहीं थी, वो दिमाग से हल्की थी। और क्या करें, पूरी स्टोरी नहीं बताएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। फिर पता है, मैं अपने कमरे में और मैं रोने लगी। फिर मेरी एक और वॉलंटियर थी, वो मुझे देखी, और वो, उसको लास्ट डे की भी स्टोरी पता थी, और उसके कपड़े को उसने हटाया था। और शी वॉज मोर सीनियर वॉलंटियर देन मी। शी वेंट आउट, शी शाउट एट दैट लेडी, आई डिडंट से एनीथिंग। बोले आपको पता है मैंने हटाया, आप उसको क्यों बोल रहे हो? कल भी आपने उसको बोला, उसने कुछ नहीं बोला। व्हाई आर यू टेकिंग सो मच ग्रांटेड? अब देखो, आप बोलोगे अब वहां पे फाइट, वो मेरे गुरु का प्लेस था, वहां पे मेरे अपने ईगो को मारना था, वहां पे इगोइस्ट होके मुझे लोगों से लड़ना नहीं था। लोग ट्रैवल करके बहुत दूर दूर से आ रहे थे, उनके लिए सुविधा मुहैया कराना, उनको शांत रखना हमारी जिम्मेदारी थी, जवाबदारी थी। मैं लड़ाई नहीं कर सकती थी। आई लव माई गुरु अलॉट, ही इज गॉड फॉर मी। यू नो व्हाट हैपेंस एट द एंड? योगी राज सभागिरी, जब हम एंट्रेंस पे गए तो वो लेडी सामने खड़ी थी, और मैं फिर वहां जाते ही पता नहीं कैसे मैं एकदम सामने पड़ गई उसके। उसने मुझे देखा, एक स्माइल दिया, सॉरी बोला, और मुझे हक किया। जो मैंने कम्युनिकेट नहीं किया, उसकी गलतियों को नहीं कुछ, फिर मैं हंसने लगी और बोले सो सॉरी, अरे मेरा दिमाग खराब था, मैंने कल भी आपको बोला और आज भी बोला। व्हाट आई एम saying my dear friends, people must be motivated when they speak with you। लोग आपके पास आए तो आप उनके दिल को छू लो। आप मतलब वो कोई भी हो, आपका बच्चा हो, आपका हस्बैंड है, कोई भी, आप एक अटेम्प्ट करो। अब आप बोलोगे अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मैं अटेम्प्ट करो, कोशिश तो करो, कोशिश करने से सब होता है। और वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि कोई यहाँ पे बैठा हो बोले नहीं ज्योति मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल जाने वाला हूँ, दुनिया छोड़ने वाला हूँ। अरे भाई, आप लोगों के पास 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल सब है। You have enough time. I'm saying you have enough time. Work on this. Make your life beautiful and others. Thanks a lot. This was from my side. कभी और मौका मिला तो और शेयर करेंगे। और अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। Definitely, I would like to take your questions. Yes. Thank you, Jyoti, for a wonderful session and covering like communication so deeply. So anyone has any question, want to share anything, your experience or? Neelam ji? Anyone here? Yeah.
Thank you, Jyoti. Yeah. Very nice question. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. So, Jyoti, thank you for a good session. Thank you. I'm a trainer. I do a lot of laughter yoga, right? Recently, I have had a lot of chest infection, respiratory distress, nose blockage, and that's causing me a lot of triggers, and then worse to what makes it worse is when I am when I my caregiver went back for 1 week, and she's coming back. She went for 1 week and then came back and brought her niece and her son. Now, and then they're touring in Malaysia, and he's staying with me. And I'm trying to adapt to the situation. My caregiver is Marianne. She's coming back from Philippines on 15th of September. And she's going tomorrow because her son finished touring tomorrow. And I am on anxiety. I had to be on anxiety pill because I have a lot of panic attacks from my siblings because I had. So how do you adapt to this new person temporary? Do I just how do you adapt to negativity? Except because when I'm so positive, how do you communicate when the person is my mom or my caregiver's niece is sometimes is not understanding me. When did you get this situation? Before that, you were completely normal? Before that, I was completely normal. How much time ago? See, she left on 27. She left on 27. She left on 27. Currently, she's still she came back on the 23rd. She 23rd she came. She left, and then 27 she came back. 27, 28, 29. It was fine. But I had to be on Xanax because my nose was very, very blocked and I was not myself. My dear, okay, understand. What I'll say, certain thing. First of all, do you do pranayam? Yes, I do breathing. Okay. Yeah. The nose blockages and all, it will be open from the breathing. Where do you stay right now? Malaysia. Malaysia. Okay. So breathing will be more better for you. Some kind of meditation also. Okay. Mindfulness for a mindful meditation that will be beneficial for you. Another thing is that how many years has gone or months has gone when you gone into this situation? Could you? I'm generally born with cerebral palsy spastic quadriplegia. Okay. I generally have anxiety, but this time I have it's really really bad because I had after my cousin's wedding, I suffered from postnasal drip from my father. We all went to a different state in Malaysia. It's called Ipoh. And then my father got sick. And then when my Understand, Rajvin. Okay, we have less time, so I would like to conclude here. I understand your situation.
Okay. But what I'll say, whatever is situation that is there, right? That is there. You have to face it anyway. There are two ways to face. One is that why it happens with me, why me, why me, why me. Okay. And this will give more anxiety. This will create more stress, tension, right? So you will not ask these questions, why me, correct? You will ask question, how can I come out of this? How can I come out of this? I will tell you, we have less time, but all right, I'll share one story with you. Recently, a month back, I was in Rishikesh. There I met with a saint. Okay, he was very saintly person. He speaks on Mahabharat, Indian literature. Okay, and he has a problem. There was a time where he was going through heart disease, and he has lost his hearing power. He was not able to hear anything, and doctors even said in hearing he has to go for it some operation. And for heart problem, doctor said you have to go for stunt. But this gentleman, he was complete devotee of Lord Rama, and he said, no, I'm not going for anything. He said, give some medicines. He went to home, and then he started watching yoga and all. He started doing some pranayam, Kapalbhati, Anulom Vilom, other pranayam. I know. And you know what happens? He was not able to hear anything, but he said a day came, he used to start, he wakes up 3 a.m. He used to do 2 to 3 hours of those practices. And after 6-7 months, one day came, his both the ears, Started hearing. it started something flowing from outside. Some Yes. liquid came from both the ears. Yes. Means whatever negativity, whatever problems were there, that came out, and he got his hearing power completely back. See, No stunt, nothing. He was living very healthy life. see, His age is 75 years. Listen, his age is 75 years. Till now, he wakes up 3 a.m. I was staying over there. I saw him 3 a.m. He wakes up, he does some yagya. After that, pranayam, his exercises, everything. What I'm saying, when you will start utilizing your time in all these things, my dear, Yes. you will become, ideal for others who are suffering from such kind of diseases. Okay. Another thing, my number will be in group. Okay. In the group from where you have got the link, right? You are into the group, I think. So with her, and whenever she wants to connect with you, she can connect with you and Yes. through mail. And if you want any Like kind of help we'll be in from the me, loop you so can, that we are aware that she's communicating with yes, then you can connect with me, and I'll speak with you, whatever more will be possible for you. But here I will say, just you go through whatever best you can do, pranayam practice and some yogasanas and meditation. Okay. I love the It will yoga. give you inner consciousness, my dear, and the things will resolve. All right, Rajvi. Thank you. I will, Anyone else? I'll find your number from Consciously Positive. No problem. Consciously Yes. positive group. I'll mention We'll the share your number. number also, and we'll connect with you via, so that we are also aware that you are getting connected with her, and whatever discussions that is going to be between you both only, because that's confidentiality has to be maintained. Yes. But sure, we are aware that you are being connected to her, so we connect with her. Right. And whatever will be possible from my side, I will help you out. That's not the issue. Okay. You are into consciously positive group, right? Yes, she's quite active, and Yes. she comes So every you day can for get my sessions. number. Even today, I will mention my number. My name is Jyoti Singh. Okay. And there would be my number. You can call me up. All right. Thank Rajvi. you. Okay. Thank you. can More accordingly power decide to the you. time, according to time Yes, difference. we have little bit here Both are time because everybody has to move and all. Anyone else who has any questions, please come on. Uday ji, Neelam ji, do you have any questions to ask, ma'am? Thank you, Jyoti. I don't think we have more questions, but it was really great session and we are already over time. So we would like to. Thank you, ma'am, for the fabulous and fantabulous session. And we look forward to host you again and again and learn more tips of communication and how to communicate effectively. Now we have come to know about the flaws that comes in with miscommunication. So now we would like to go further and deep into that. So we look forward to hosting.